anniversary of our independence. I request our chief guest, Right Reverend Peter Brown, Bishop of Jhansi, our college manager, Reverend Father Crystal Das, our college principal, Reverend Father Samay Akin, to hoist the flag. College! Attention! Stand at ease! Attention! Salute! Hands down! Let's begin the national anthem. Let us invoke the Almighty to shower His blessings upon our country India and all its citizens. Sagrika Singh will pray for our nation, which will be followed by a hymn. O God, at this time when we have to keep physically distant from one another, it is more important than ever that we draw close to one another spiritually, praying together. Lord, we entrust our nation to your loving care. Send your Spirit to touch the hearts of our nation's leaders. Give them the wisdom to know what is right and the courage to do it. As we face these uncertain times in our nation and the world, we ask you, Lord, to dwell among us. Lord, come to our aid so that we may experience your healing love. Heal those who are sick with the virus. May they regain their strength and health through quality medical care. Heal us from a fear which prevents neighbors from helping each other. Be with the leaders of our nation. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. May they know your peace as they work together to achieve on this earth. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He is good all the time. God
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He is good all the time. On behalf of the Cathedral family, I welcome our college chairman, Right Reverend Peter Parapulal, Bishop of Jhansi. Your Lordship, your presence has always enhanced our celebrations, and we wholeheartedly welcome you in our midst. I welcome our college manager, Reverend Father Christodas. Father, you have always supported and encouraged us, and we welcome you to this celebration. A warm welcome to all the volunteers present here who are extending their wholehearted support to make this program success. Thank you to one and all. As we remember our national heroes today, let's renew our pledge to always uphold our national unity so that we can live together in peace and harmony. Rutub Divakar will express his views on this day. A very good morning to everyone present here. Today, I, Rutub Divakar, am standing before you all to deliver a speech on this auspicious occasion of the 74th Independence Day of India. We all know that India got its independence from the British imperial rule on 15th of August 1947. This day marked the end of a 20-decade-long struggle of our ancestors to achieve freedom. The spark of rebellion which arose by the efforts of Mangal Pandey in the revolt of 1857 ignited a desire for freedom in the hearts of people throughout the nation. The citizens were fed up by the atrocities of the British, be it the Jallianwala Bagh massacre, the oppression of farmers, ruin of trade, industry, or racial discrimination itself. All these endless plights of the British resulted to a feeling of nationalism and patriotism in the hearts of the people. They demanded Purna Swaraj, or complete independence from the British rule. Thus, after 100 years of countless struggles, India was finally able to gain independence. However, the aftermath itself was brutal. The oppression of farmers, the underdeveloped backward classes, stagnation of the economy, all factored to a very poor condition of the country. However, our visionary forefathers at the time, like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, and Dr. B.R. Ambedkar, all took it upon themselves to further the cause of development of the country as well as the betterment of its people. Their actions helped the country to climb up the world ladder and continue to progress and grow as it does even today. 15th of August each year
is a very emotional day for every Indian. I'm sure that none of us present here had come into being during the freedom struggle. We probably have no idea how it feels to be ruled by a foreign power in one's own land. We don't know how our ancestors felt in the forefront of the freedom struggle. But regardless of all this, we celebrate Independence Day with great enthusiasm and vigor. This shows not only our love for our country, but also our tribute to the countless freedom fighters who sacrificed their lives for the betterment and freedom of our country. I believe that all of us should feel very fortunate that we were born in an independent India with our own human rights, such as the right to speech, the right to action, the right for expression, but most of all, the right to choose. We were born with privileges which sadly our ancestors had to fight for. In today's world, one can easily earn a living through hard work, but in those days, our ancestors spent countless years without food. Thus, we should learn to respect our country as well as should not take freedom for granted. One individual may die for an idea, but that idea itself shall reincarnate into 1,000 lives. This quote by Netaji Subhash Chandra Bose means that our ideals are the reincarnations of our ancestors' beliefs. Thus, we should strive to achieve what our ancestors fought and sacrificed their lives for. We must work very hard in order to progress and grow. What we need today is not a scapegoat, but actual progression through national unity, just like our ancestors achieved 100 years ago. In today's world, shifting the blame onto one another as well as to remain condescending to the face of authority will get us nowhere. I am very thankful to all my teachers for teaching us not only the lesson of independence, but also the true meaning of patriotism, nationalism, and unity. We have been taught to respect our past as well as strive for a better future. And we shall promise to remember this till perpetuity. With this, I'll give a pause to my words and leave you all with a simple question. Do you truly believe in all your hearts that you are doing your level best for your country? Every citizen of India deserves to live a prosperous life, and we, through education, can help our country sprung to all its glory and prosperity. Thank you and Jai Hind. जब जब देश में क्रांति या देशभक्ति की बात की जाए तो जवानों के रगों में खून उमड़ने लगता है। बुजुर्ग भी जवान होने लगते हैं, बच्चों में जोश आने लगता है। महिलाएं भी देश के लिए घर का त्याग करने को तैयार रहती हैं। ऐसा महान देश है हमारा। ऐसे ही देशभक्ति से भरे दिन को मनाने के लिए प्रस्तुत है एक गीत।
हमें अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सही। महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान में ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। ओ, ओ, We need to be mindful of our attitude towards others, say no to corruption, and give every citizen a sense of belonging. In doing these things, we can build and sustain the kind of nation our past heroes dreamt of and laid down their lives for. Sagrika Singh will enlighten us with a few words. स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं सागरिका सिंह कक्षा 12 की छात्रा आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। मानव मानव एक समान, जात पात का मिटे निशान। आज़ादी यह एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतीय की रगों में खून बनकर दौड़ता है। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ादी मिली। यह दिन भारत का पुनर्जन्म का दिन था। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया था। इस स्वतंत्रता की खुशबू के लिए ना जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपनी जान हंसते हंसते इस मातृभूमि पर कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे कितने ही क्रांतिकारियों ने क्रांति की ज्वाला भड़काई। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एवं हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्य एवं
अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेज़ों को देश से जाने के लिए मजबूर कर दिया। हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें शांति एवं स्वतंत्र धरती प्रदान की है। आज हमारा देश न जाने कितने क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, चाहे फिर वह आधुनिकीकरण का क्षेत्र हो या शिक्षा का। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी देश का मान बढ़ा रहे हैं। आज हमें अपनी सरकार चुनने की पूर्ण आज़ादी है और हम सभी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, आज हम सभी आज़ाद हैं और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें हमेशा अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। मैं अपनी वाणी को कुछ इन पंक्तियों द्वारा विराम देना चाहूंगी। ना तन चाहिए ना धन चाहिए, ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं सब मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा हूं सब मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Each and every Indian is quite excited to celebrate our 74th Independence Day. So, to share this feeling of enthusiasm filled with patriotism with you, here is Harshita Mishra with a dance. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। It is time to felicitate our college ICSE and ISC toppers. I request our chief guest, Right Reverend Peter Parapulil, Bishop of Jhansi, our college manager, Reverend Father Christo Das, our college principal, Reverend Father Sahai Nathan, to honor our toppers. Ayush Sahu. He has scored 97.8% in ISC and is our college topper. Not only this, he has scored 100% marks in mathematics and made us feel proud. Sahil Singh stood second with 96% marks.
Sahil has scored 100% in commerce and physical education. Vishnu Sahu has scored 94.5% marks and stood third in our college. Kanika Srivastav has scored 94.5% marks. She also stood third in our college. We heartily congratulate all of them and wish them good luck for their future. Our college ICSE result was 100%, and our toppers are Vaibhav Shukla, our college topper with 98%. Vaibhav Shukla has achieved second rank in Jhansi and made us feel proud. Ayushi Rajput stood second in the college with 97.2% marks. Lovely Sen stood third with 97% marks. We congratulate them for their achievement. We thank all the parents for the support and guidance. Thank you, Your Lordship, for honoring our toppers. We request you to please enlighten us with a few words. Respected Principal, Father Sahayanathan, Manager of the college, Father Christudas, my dear parents, guardians, teachers, and my dear students. Today we are celebrating the 74th Independence Day. It is very important for our nation to celebrate this day and remind ourselves that we are freed from the slavery of another nation to grow more and more and to develop our nation and to follow our constitution and live a life that is worth living as the nation builders. I congratulate all of you, especially the children of this age, that independence means much for them. Because there was a generation that struggled for the independence. And in history we learn about independence struggle and how we were humiliated in front of the whole world, being subjugated by another nation. When we celebrate the 74th Independence Day
it is good that all of us reflect the freedom that we enjoy in our day-to-day life. It is worth asking this question, that are we free from corruption? Are we free from slavery? Are we free from poverty? Are we free from unemployment? Are we free from subjugation and destruction? These are the introspections that should go within ourselves, that we should be able to come out of these situations and enjoy the freedom that is gained by a great struggle of independence. My dear children, our nation is growing. Our nation is building up. Our nation is building up infrastructures. New education policies are coming with a view to build up this nation, to bring this nation as the best nations of the world, so that we may make this world a worth living place. We may always respect one another. We may live as human beings with human qualities and remove all superstitious beliefs, all things that are not becoming in our lives, so that we are able to lift up our head and be able to say that we are free human beings living our own lives in a qualitative and quantitative way. My dear children, let us learn to respect one another. Let us have love for our nation. Let us patriotism grow within ourselves, that the principles of our constitution are embedded in our own personal life, that we respect every human being. Every citizen of this nation is able to live freely and be able to express himself completely, so that he is respected, he has the right to live, he has all the privileges as a free citizen of this nation. I wish all of you a very good Independence Day. Independence that we are freed from all the superstitious beliefs. We are freed from all corruptions. We are freed from all injuries that are brought to us, and be able to live freely and enjoy our life as children of God. Let us establish a kingdom where there is peace, where there is happiness, where there is joy, and where there is fraternity and brotherhood. These are the values that are thrown to us by our constitution. Let us uplift this constitution and enjoy the freedom that is given by our God Father, to be children of God, to be one with our nation, to be one with our society, to be one with everyone who is dear and near to us. Happy Independence Day to all of you. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Your Lordship. I request our principal to encourage us with his words of wisdom. 74वां स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर कैथेड्रल कॉलेज झांसी के ओर से मैं हमारे देश का, देश के नेताओं
एवं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालय की ओर से झांसी जिला के कमिश्नर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वेरी रेस्पेक्टेड आंध्रवंशी IAS, हमारे जिला के IG साहब, SSP एवं सभी पुलिस डिपार्टमेंट के सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। कोविड-19 महामारी के इस अवसर में हमारे जिला के सभी लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के महान कार्यों को देखा। रात और दिन वे लोग अपने समर्पित जीवन द्वारा हम सबों को इस महामारी से बचाए रखने के लिए सेवा की। उन सबों को हम धन्यवाद देते हैं। आज मैं हमारे जो पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावकगण एवं गार्डियंस को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि वे लोग इस महामारी के काल में विद्यालय के सभी टीचर्स के साथ मिलकर अपने हर एक घर को एक छोटा सा कैथेड्रल कॉलेज बना दिया। टीचर्स के साथ मिलकर माता पिता बच्चों को पढ़ाने लगे। सचमुच विद्यालय बच्चों के लिए एक दूसरा परिवार है। बच्चों के परिवार उनके लिए पहला विद्यालय है। इस महत्वपूर्ण बात को हम लोगों ने इन दिनों में अनुभव किया। मैं तहे दिल से सभी पेरेंट्स, गार्डियंस को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं, आगे भी विद्यालय के साथ मिलकर बच्चों के पढ़ाई में और उनके भविष्य को बनाने में हम लोग उनके लिए कार्य करते रहने की प्रयास करें। My dear children, my dear students, we all the teachers miss you during these days. It's true. Our school looks empty without you. But we want your safety. The government and the parents and all of us, we look for your good health. इसलिए इस महामारी के समय आप लोगों को घर में रहना पड़ता। घर में रहकर ऑनलाइन क्लासेस द्वारा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपके मेहनत बहुत अच्छा है। आगे भी इस महामारी के समय को एक छुट्टी के समय के रूप में ना लेकर घर में अच्छी तरह से पढ़ाई करने की एक अच्छे मौका के रूप में देखकर समय को अच्छी तरह से प्रयोग कीजिएगा। आगे जल्दी से जल्दी हम लोग विद्यालय में जरूर मिलेंगे। आप लोग घर में भी और विद्यालय में भी अच्छे से अच्छे पढ़ना है, यही आप लोगों के लिए विशेष संदेश है। आज मैं विशेष रूप से हमारे टीचर्स को, विद्यालय के सभी लोगों को, हमारे पेरेंट्स, बच्चों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उनके मेहनत, टीचर्स, योर हार्ड वर्क
is very much appreciable. ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करते हैं. कई घर में परेशानियां जरूर हैं, फिर भी आप लोग बच्चों के लिए आपके समय को देते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छे पढ़ाई देते हैं. इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ. पेरेंट्स से विशेष रिक्वेस्ट है, आप लोग विद्यालय के नियमों को पालन करते हुए टीचर्स और विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को लगातार कोऑपरेशन देते रहें. आप और हम सब मिलकर आपके बच्चों के भविष्य को बनाएंगे. आज मैं आप लोगों के सामने एक विशेष बात, एक धन्यवाद बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं. आज आप लोग इस प्रस्तुति को इंडिपेंडेंस डे के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने देखा. इसके पीछे हमारे झांसी कैथलिक के 2 युवाजन हैं और उनके साथ हमारे ऑफिस मैनेजर मिस्टर ग्रेगरी भी हैं. ये जो 2 युवाजन मिस्टर रेमी एम्ब्रोस पीटर और मिस्टर लिएंडर क्रूज, ये दोनों अपने समय को त्याग कर दूर प्रसारण द्वारा, इस तरह के YouTube चैनल द्वारा वे लोग कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पूजन विधि कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते आए. इसलिए आप लोगों के ओर से हमारे धर्म प्रांत के बिशप स्वामी मोस्ट रेवरेंड पीटर परपुल्लिल एवं पुरोहितगण और सभी लोगों की ओर से इन तीनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि उन्हें ये छोटा सा पुरस्कार देकर उन्हें हम हार्दिक अभिनंदन करें. मिस्टर रेमी पीटर, मिस्टर लिएंडर क्रूज एवं मिस्टर ग्रेगरी मंच पर आइए. Thank you, my dear Remy Peter, Mr. Leander Cruz, and Mr. Gregory, for having created this wonderful Cathedral College Jhansi YouTube channel, and today you inaugurated this channel. Once again, my dear parents and dear students and my dear loving teachers, I thank you and wish you a very, very happy Independence Day. I honestly assure you of my prayers. We all in the diocese pray for every family. हर एक विद्यार्थी के लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे रहें और इस बीमारी से बच कर रहें. मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और हर पवित्र स्थान में आप लोगों को हम लोग याद करते हैं. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद, जय भारत. I, Rutup Divakar, stand before you all to propose the vote of thanks. My heartfelt thanks to our college chairman,
Right Reverend Peter Parapullal, Bishop of Jhansi. Your Lordship, you have always been a source of encouragement for us, and we are blessed by your benign presence. Today, on this special day, we say thank you for spending your precious time with us, and it was an honor having you in our midst. I extend my gratitude towards our college manager, Reverend Father Christodas, for being with us during this national celebration. Thank you, Father, and we hope you join us for our future celebrations. I would also like to thank our principal, Father Sahai Nathan, for all his support and encouragement. My sincere thanks to all the volunteers without whose support this show would not have been a success. The Cathedral family is immensely thankful to you and prays for God's abundant blessings upon you always. Thank you. Cathedral life, we are so proud to be a part of this college, to shine in life ever. Cathedral lives, we are so proud to be a part of this college, to shine in life ever. Look up to God supreme and lift our hearts to Him. With this motto, we move our forward march. Look up to God supreme and lift our hearts to Him. With this motto, we do a forward march. Cathedral life, we are so proud to be a part of this college, to shine a light ever. Come of comrades, line up together to build a nation that brings the peace to all. Come of comrades, line up together to build a nation that brings the peace to all. Cathedral life, we are so proud to be a part of this college, to shine a light ever. Cathedral lives, we are so proud to be a part of this college, to shine a light ever. Wish you all a very happy Independence Day. May this Independence Day be special for you and your loved ones. Thank you.